Hi everyone, if my voice sounds tired today, that's because I actually am. I haven't slept properly from the last 5 or 6 days, and in the last 2 days alone, I have traveled like nearly 700 to 750 kilometers for work, pulled out an all nighter to finish my responsibilities, and honestly, my body is so exhausted. But I'm still posting this video. Like, why? Because many of you keep messaging me saying you feel motivated when I share my journey, and I have been getting a lot of emails, comments, and personal texts lately. So, this one is for you guys, and I know recently results were declared, and most of you were feeling so disappointed. So, it was just I thought, ki, why not come up with a video so that I can just ease out your pain in a way or the other. Also, before anything else, I want to be honest. The clips you see of me studying do not mean I study every single day perfectly. Some days I don't study at all, like really. And some days I'm too tired to even open a book, and that's completely okay. Right now, I'm mainly practicing mains answer writing as I've decided to skip 2026 attempt because of state election duties, and I don't want to waste an attempt when I know I can prepare better. So these days I'm completely focused on UPSC mains आंसर राइटिंग बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया था इन 2025 का जो मुझे पेपर अच्छे से करना था सो फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस बुक दिस इज़ एक्चुअली अ मेंस आंसर राइटिंग बुकलेट वेयर वी हैव ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गिवन सब्जेक्ट वाइज तो मैं एक एक सब्जेक्ट पढ़ के मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ आजकल सो इट्स बीन अ वेरी लाइक गुड स्ट्रेटजी अगर गैप हो गया है प्रिपरेशन में या फिर अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए आइडियाज़ एंड कंटेंट चाहिए तो लेटली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक बिकॉज दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एंड यहाँ पे आपको सारे पेपर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड वाई आई एम यूजिंग दिस बुक इज़ बिकॉज बहुत सारे बुक्स या फिर कॉम्बो सेट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है एक ही बुक में अगर हो जा रहा है सब कुछ देन वाई नॉट इट्स गुड ये कुछ 500 का बुक मैंने लिया था इसमें मुझे ऐसे क्वालिफाइंग पेपर GS1 GS2 GS3 GS4 एवरीथिंग मुझे मिल जा रहा है यहाँ पे एंड यस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सब लोग ये एक गलती करते हैं कि जो बुक्स में रेफरेंस बुक में दिया होता है वही कंटेंट छाप देते हैं ऐसे नहीं करना है यू शुड हैव योर ओन कंटेंट आप बस आइडिया ले सकते हैं उनको पॉलिश करके रिस्ट्रक्चरिंग करके खुद के आंसर्स लिख सकते हो ऑल्सो या दिस बुक इज़ अवेलेबल इन हिंदी तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं उनके लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हो अगर चाहिए तो लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वाई आई एम स्किपिंग 2026 अटेम्प्ट this is because I still have many attempts left considering my age but for me I know it's not about how many attempts I have I do have this idea and I have this thought in my mind that I want to clear this exam in my very next attempt because without fully prepare होके exam में बैठना is not my thing and most importantly balancing a 24-hour job and a competitive exam is not about motivation fades but discipline stays आप वीडियोस देख के जो मोटिवेट होते हो उससे आप थोड़े टाइम के लिए ही मोटिवेट हो सकते हो बट इफ़ यू डोंट हैव द थिंग इन योर हार्ट एंड माइंड कि मुझे ये करना है यू वोंट बी एबल टू स्टिक टू द प्लान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड येस व्हेन योर जॉब इज़ अनप्रेडिक्टेबल यू कैन नॉट like be on any fixed schedule and to balance out the exhaustion and stress I personally rely on कुकिंग एंड वर्किंग ऑन माई स्किल्स सो दैट मेंटली मैं नॉर्मल रह सकूँ और मैं खुद और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ने बैठ सकूँ थेरेपी के नाम पे आई कुक माई ओन फूड व्हेन माई मॉम इज़ नॉट हियर विथ मी at the place where I'm posted right now so I prepare my own lunch and I take it to my office and it works as a therapy for me and another thing that works as a therapy for me is like making videos and posting the same on YouTube because I really enjoying doing that and कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है हम YouTube में वीडियो डालना चाहते हैं बट कैमरा फेसिंग स्किल्स नहीं है बोलने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है Now, when I look into myself 2 years back, I see a huge difference because with practice and with more experience, I have grown into this confident individual. And in this journey, Sparky AI app has been a very good companion. And I'm sharing this because some of you wanted me to share some tips on how to like be confident and talk fluently. So I think this is one of the best way where you don't have to spend your money and you can learn skills properly so yeah do check it out also here's a short clip of my piano learning journey
So when your job is unpredictable, you do not depend on fixed schedules, you only depend on skills instead, like time prioritization, energy management, emotional control, and mental resilience. And I am sharing this tips because I have been keeping my sanity alive by doing these things only. I don't have a social life, I don't have friends, I don't go out, and I am completely surviving based on these skills. I know most people think balance means equal time. That's wrong. Balance means adjustment. Some days we work 100%, some days studies get 100%. But what matters is consistency over months, not perfection in a way. And I'm still trying to figure it out कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ. And I believe when time is limited, strategy matters more than hours. Instead of trying like studying every day, I focus on high yield topics, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और जहाँ जहाँ पे भी मेरा मुझे लगता है कि आई एम गोइंग वीक, मैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हूँ. And this has been a thing with me that I always believe 1 hour of focus study is better than 5 hours of distracted reading. इसलिए I always rely on Pomodoro technique, and you guys have seen that over the last 2 years since like from when I started making videos, and you have seen कि मैं हमेशा Pomodoro लगा के ही पढ़ती हूँ. Using Pomodoro techniques, using AI tools has been a great part of my journey, and I have been sharing the same with you again and again. I know strategies सबकी different हो सकती है, but अगर आप lost हो then you can definitely rely on my strategies, and you can like personalize according to your needs. Also, I want to answer some of the questions जो मेरे subscribers मुझे mails पे लिखते हैं, like when you work long hours and study, burnout is real. Like I felt it, and these are the days I feel low, tired, and emotionally drained. And I guess कि आप लोगों में से बहुत लोगों भी ऐसा feel होता होगा. So what helps me cope up? Accepting the fact that I cannot do everything daily. I'm not a superhuman. Not comparing my pace with full-time aspirants, and taking guilt-free rest when my body demands it. So अगर आप भी इसी situation में हो, so please accept and don't put pressure on yourself. Even I felt like a failure when I thought I won't be able to sit for this year, but so right now my focus is on only 2027 attempt. So yeah, I'll be posting more of my study journey. So yeah, stay tuned.